Assalamu alaikum everyone. So today we are in Livadia. ये एक छोटा सा टाउन है ग्रीस का. हम वैसे ही we are going through the town और बहुत मज़ा आ रहा है इधर. लाइक हम इससे पहले इसके ग्रीस के एक और टाउन में थे, लाइक प्रेवेजा. इट वाज लाइक मोर लाइक अ विलेज. और आज हम लिवाडिया में हैं, तो सोचा क्यों ना आपको इसका भी एक टूर दिया जाए. तो हम बाहर आए थे खाना खाने. हमने खाना खाया. रेस्टोरेंट्स बहुत मज़ेदार हैं, खाना हमें बहुत पसंद आया. तो वैसे ही लाइक हम जा रहे थे, लेकिन हमें एक बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आया. तो मैंने सोचा क्यों ना कि वीडियो बनाई जाए, उसे कैप्चर किया जाए. एंड देन अपने दोस्तों के साथ हम उसी साइड पे जा रहे थे. देयर इज़ अ स्मॉल स्प्रिंग. हमें किसी ने बताया तो हम उस साइड पे जा रहे थे, लेकिन उस पे जाने से पहले हमें एक बहुत प्यारा व्यू आया. तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए. सो द व्यू इज़ हियर. लाइक आप देखें कि माउंटेन्स के अंदर जो है ना, वो इस वक्त बादल हैं. और टाउन बहुत प्यारा है. मुझे वाकई लाइक बहुत अच्छी वाइब आ रही है. तो ये हम सारे दोस्त अगेन जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना आपको साथ साथ थोड़ा सा घुमाया जाए. घर बिल्कुल इसी तरीके से ही लग रहे हैं. छोटे छोटे घर हैं और बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं इधर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस विलेज. ये सिटी और ये जो टाउन है ये भी छोटा सा टाउन, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. और इधर हमने एक चीज़ नोटिस की है कि इधर जो है ना, लोकल ब्रांड्स थोड़े से ज़्यादा हैं. लाइक लोकल ब्रांड्स आर मोर हेयर एज़ कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है. लाइक जिस तरह कोई भी शूज़ के ब्रांड हो गए, नाइकी, पूमा, उससे ज़्यादा इनके अपने लोकल ब्रांड्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैं. तो मैं भी ज़रा दोस्तों की तरफ भी चलता हूँ, उनसे भी ज़रा पूछते हैं उनके व्यूज़. एंड so I have this friend from Nigeria. I guess Lukman, you came here on DART scholarship, Yes, is it? yeah. So can you tell our audience like who you are, what have you done before, and how do you like came here? Yeah, my name is Lukman, Uh-huh. and I'm from Nigeria. I studied water resources and environmental engineering. Uh-huh. I'm a graduate of Ahmadu Bello University Zaria. Uh-huh. And in 2023, I was opportunity to secure the DAD scholarship. So you are here like on DART scholarship? Yes, So exactly. okay. I'm a data scholar, Uh-huh. so I'm studying tropical hydrogeology and environmental engineering at TU Darmstadt. You can tell them like we are class fellows. Yeah, of course. It's also my colleague. So I met him first in hydrogeology class. Yeah, So I still initially, remember that. I saw him in the bus, but I was thinking he's an old man. Like a man with 3 kids. No, 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 Well, no, yeah. no, I'm still young, bro. So I was surprised when I saw him in class. Oh, Oh. yeah. So, that was So very you are nice. also like, you think like from my white hair, you think like No, I'm old? no, from your face. Oh, I really? think maybe you were stressed that day. Oh, it was the first day. Yeah. You were my savior on that day. Exactly. Okay. It was a nice one. Yeah. So what would you like to talk about this beauty? Look. This is serene. You know, the picturesque is fantastic. Yeah. You can see the mountain top. How beautiful is this town? Like if you compare this with Provenza, I guess the town is going to have like 10 out of 10. Yeah. I think this town is like 10 over 10. 10 I'm over gonna 10. give it 10 over 10 Yeah. because it's more developed. Yeah. They have more development here than Rivers. And can you tell our audience like why we are here? Yeah, we are here on a field trip. Yeah. Field trip. And what we are like doing from like past 4-5 days. We've been exploring different cities. Uh-huh. First of all, we landed in Athens. We touched down in Athens, and then we took a 4 hours ride to Prevaza, Uh-huh. where we lodged. Our first night we lodged in Prevaza, and then. So I found something. I found like you were talking something. Kabul hai, Kabul hai, Kabul hai, Takbir. You know what happened? Yeah, You got married. Oh, but this is haram. Shen, how do you know? Like what did he say? Yeah, we will marry me. Yes, we will marry me. Yes. So there is something Okay, here. let's go. Maybe we can go there. Garden house? Garden house means go straight.
तो हम जरा या so Lukman, Yeah. you were not in our previous video. Yeah. So how do you find like Livadia now? But it's really beautiful, man. Yeah, Nice as place. compared to like Preveza. Yeah, Livadia is also beautiful, but I think Livadia is more like an urban Uh-huh. setting Yeah. compared to Livadia. Livadia is also beautiful. Uh-huh. So the sea, the See, boat ride, yeah, the yeah. people, the food. Cruise, yeah, Yeah, cruise was exactly. actually superb. Shout out to the lady Yes. who kept us Yeah. entertained. And Throughout our boat trip. so like बिल्कुल हमने बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि प्रवेजा का भी अपना ही मज़ा था, लेकिन जो इस टाउन का मज़ा हमने हमारा दूसरा दिन है इधर, तो इस टाउन की जो ब्यूटी है कि ये छोटा सा टाउन है। ये देखें इधर ये एक छोटा सा स्प्रिंग जा रहा है, हमने सुबह इधर ही आना है। हमने वाटर क्वालिटी टेस्ट करनी है स्प्रिंग की। हमारा जो सुबह का पहला स्टॉप है वो यही है, और उसके बाद हम सुबह जो है वो एथेंस की तरफ मूव करेंगे। तो आप ये ज़रा ब्यूटी देखें, लाइक इट्स एक्चुअली अ सुपर्ब सीनरी। ओके, तो जी सीन्स कुछ यूँ हैं, सीन्स कुछ यूँ हैं। सो दिस इज़ जस्ट अनदर टाउन। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी ब्यूटी को बयान करने के लिए। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सीनरी, लाइक मैंने इस तरह का छोटा सा टाउन पहाड़ों के अंदर कभी भी नहीं देखा। तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट मच नेचुरल ब्यूटी आफ्टर हैविंग लाइक सो एक्सपीरियंस ऑफ प्रवेजा। मुझे आइडिया नहीं था कि भाई ग्रीस इतना भी प्यारा हो सकता है। तो लाइक इसकी तो रेट करने के लिए नंबर्स भी कम पड़ रहे हैं। ये देखें अब बादल, पहाड़ों के अंदर बादल हैं, और लाइक आई हैव नो वर्ड्स, आई एक्चुअली हैव नो वर्ड्स।